Hello, hello. Thank you, sir. Hello. इस पे दिखाता है ये लाइव. I request all the dignitaries to please take their seats on the dais, and I request all the participants to be seated. जब होगा तो सरस्वती वंदना ना. Thank you, वो sir. इसमें है ना. नहीं Good morning, everyone. I am Dr. Seema Guglani, and it ये is लगाना truly है a pleasure to extend a warm welcome to all the dignitaries, faculty, and ये researchers from various academic institutions लग जाता है ना. present here at the inaugural function of the International Conference on Pure and Applied Science and Medical Science within India at the rate 2047. With the blessings of Saraswati Ma'am, we proceed to invoke her divine presence through the soul-stirring Saraswati Vandana, a musical tribute to the goddess of wisdom and knowledge. Mr. Kanish will entertain us with a dance performance during the Saraswati Vandana. I welcome Mr. Kanish, and I request Mr. Soni to play the Saraswati Vandana. अरे कोई बच्चा है यहाँ तो बोले किसका मोबाइल इसको साउंड क्या करें. से चाह रहा है वो सुनाना है और कोई चैट में आ रहा है. वो खोल के इसमें लगा दिया है अभी लगा. इसकी उधर नहीं आ रही है क्या सामने वाले उधर नहीं आया क्या. Thank you, Kanish. Next, we witness the rendition of our Kuldev, a manifestation of our institution's pride and identity. I request Mr. Suman to please play the Kuldev. जयति जय जय ज्ञान का रूप जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम दो क्लास के हैं. सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक पुरातन ज्ञान भाव मुझे जाना है. सत्यम के मंगल की व्यवहारों का समागम
विद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित वेश गुरुजन कर रहे थे छात्र और छात्राएं नवल वैश्विक नानव संस्कारों का जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान आलोक अनुपम मीटिंग का तो मुझे पता क्या है, इसी के बारे में कहेंगे। Professor Balram Pani as the Chief Guest Dean of Colleges, University of Delhi. It's a matter of great pleasure for all of us that he could find time to be with us despite of his preoccupation. So may I now invite Principal Sir and Dr. Subodh Kumar and Professor Neena Shirish Ma'am to extend their heartfelt felicitations to Professor Balram Pani. ज्वाइन कराना मैं वेटिंग में आप किसको देखते हैं सर हाँ जी कल तो इसके साथ में अगले महीने ये मतलब इसमें ये तो नहीं मान के थे Dr. Sriram sir has joined us online. Subhanji. यस सर Dr. Sriram sir has joined us. यस मैम ये अपनी इनकी डेट तो अलग आएगी जब एग्जाम शुरू होगा तो एग्जाम में कभी श्रीराम सर कौन है सर श्रीराम सर कौन है इनका डेट बना तो दिया है कौन अच्छा कोई 003 में तो बैग नहीं होगी लेकिन वो तो अभी एग्जाम शुरू हो जाए श्रीराम सर ये हाँ नहीं ये नंबर नहीं For the अभी पूरी करेंगे सर बैंक के नंबर I kindly request Principal Sir, Mr. Balram Sir, and Professor Ruchika Ma'am, Professor Kusha Ma'am, to extend their warm greetings to Dr. Sriram Sodhaiva. Sir, welcome to Samlal College. Sir, namaskar. Namaste, sir. Pranam to everybody. Namaskar. Namaskar to everybody. For the next felicitation, I invite Professor Kusha Tiwari and Mr. Balram Sir to extend their warm greetings to Professor Ruchi Rajana. हेलो नमस्कार अच्छा मैं कह रहा था उसका बिल भेज देना एक बार बना के मुझे हाँ बस है ना जीएसटी बिल पक्का बिल हाँ पक्का बिल भेज देना उसका इसी लैपटॉप से चलाता है हाँ पुलिस वाला जो पेमेंट जो कल भेज देना हिसाब से बना के उन्होंने हाँ तो उसका बिल भेज देना बस आज पक्का बिल हाँ पेमेंट रुक रहा वो दरअसल बैंक से कभी रुक रहा ना उसके चक्कर में Thank you, sir. Thank you, ma'am. तो उसे भी देने आज वो भी मांग रहा तो आप भेज दोगे तभी हो पाएगा ठीक नहीं उन्होंने तो बढ़ा दिया होगा इसलिए दुकान पे हाँ वो पक्का तो आप बढ़ाओगे हाँ तो बस होगा सुनो मैं बैठा क्या चेक भी नहीं किया यही होता है May I now request Dr. Anuj Kumar Sharma, Dr. Vinod, Dr. Rajni to present their sincere congratulations to Professor Sanjay Singh. दो में दिखाते थे कैसे दिखाते थे I invite also Professor Ruchika Ma'am to please come on the dais.
करना होता है, क्या करें यहाँ बैठ के पता नहीं क्या करता है। And I also request doctors to go to please accompany them. वो आया था जब वो सबसे लास्ट में तो आया शुरू। क्या किया फिर बैठ के? जिन पे चेक तो करना था, आवाज आ रही है नहीं जा रही है? ये तुम लो 2 मिनट जल्दी आना दो। पूछ के नहीं गए थे इसलिए एक बार जैसे आवाज जूम कर लिंक था मेरे पास, जूम कर लिंक है। Continuing with the expression of honors, I request again Dr. Subodhkar, Dr. Virendra, Dr. Sudhir and Dr. Swati to accept their warm felicitations to our respected principal, sir. लेना था मुझे So because of the paucity of time, we are skipping certain few things. So let's move on to the next presentation. We are skipping certain presentations. So we are moving to the next event, that is the introduction of Professor Balram Pani. So it is an honor to welcome Professor Balram Pani, presently serving as Dean of Open Learning, University of Delhi. He is also leading Bhaskar. He is also leading Bhaskar College of Applied Sciences, University of Delhi as principal since last 7 years and has more than 25 years of teaching experience. He has published more than 50 research articles. He has supervised 8 research scholars for PhD and postdoctoral. He has handled several projects of more than 1.25 crore research grants. He has worked for the upliftment of the education sector through his diverse experience and expertise. So we are privileged to have you as the distinguished teachers for this event. May I kindly request you to grace with us with your insightful address. आवाज तो यहाँ से जा रही है। YouTube पे चेक करो एक बार, YouTube पे देखो एक बार कॉलेज के लिए। नमस्कार। All India Convener by Mathematics. चेक अपने साइड से एक बार करना है। Dr. Subodh Kumar ji, Vijay Kumar ji, Dr. Tiwari ji, and my dear colleagues and students. First of all, I congratulate you for having this international conference on advances in pure and applied mathematics. And you know mathematics, just like stone is the source of all energy. Similarly, mathematics is the source of all the education science. Because without mathematics, science cannot be. And similar way, nowadays, mathematics is also very helpful to the humanities and commercial and economic future. Very important component. But nowadays, with our country is advancing and everything is advancing in successful way and other ways, the mathematics is also, this is the advanced mathematics. Mathematics is also used in political science, history, and social sciences. Because the data analysis is very much required. Statistics, it is very much required. And whatever, the beauty of the mathematics is that in the other courses, whatever you can explain in a 3-4 pages, we can also utilize mathematics and all. So this is the coming of that mathematics. And this mathematics, many research work also are going on, and first type of international conferences are there in the right now. The statistics, data analysis, they are very much important nowadays. And that's why some type of conferences are advanced mathematics is gateway. And you know the calculation, how to calculate it is here. It is not
that how YouTube quickly you खोला calculate all these हमारा things. YouTube It पे is आवाज not आ like रही है that. Mathematics, YouTube पे how आवाज आ रही है यहाँ perfectly से you will calculate. If YouTube नहीं खोल you पाया are इतना देर में perfect तुम in लोग तो mathematics, खत्म हो गए हो definitely whatever SLC you ड्यू can ढूंढो ना say or you do, that will be because nowadays you just see it in methodological science. The methodological science in the early days, whatever the analysis was taking place, because of that mathematics, whatever the data were available, that was not perfect. So that's why the analysis, whatever the analysis they were doing earlier, the methodological was failure. आनंद जी Right कहाँ गए now, nowadays, whatever they are doing, if they are saying that okay on this day they are learning it. That is the beauty of the mathematics. When it यही will वाला बात सुनने लगे calculate आवाज it जा रही है perfectly, then definitely the authentic product will come out. Therefore, if you move in the right direction and the right thing, then definitely you will follow. Whatever the product, it will be in the perfect manner and it will be the right one. So, again, I congratulate for this one and you have reminded me. I'm very much thankful. And because of my very obvious work today right now, because yesterday I was not known that okay, there's a very important meeting there. Now, most of the meeting is also going on. That's why I am moving. So for that, then my apologies. I will go right now. Okay? Take a nice day. Thank you. Thank you very much, sir, for your different words. I will take slide progress more from user please. The engraving of the book of artifacts is a moment we have all been eagerly awaiting. So I request our chief guest, Professor Balram Pali sir, and the other dignitaries on the dais to kindly do the honor. आप जूम पे सुन रहे थे ना सही आ रही वे कह रहे हैं कि जो राइस का भी बलराम सिंह ने बोला मुझे कुछ नहीं पता क्या बोल रहा है क्या नहीं तो कैमरे में हुआ है कि राइस का वो दिख नहीं रहा है क्या कैमरा कैमरा चल रहा है ऑन कर दिया अपने आप ऑफ हो गया यहाँ पे क्लिक किया वे कह रहे हैं कि जो आसपास की आवाज ज्यादा आ रही है अच्छा नॉइस एक बार दो मिनट भाग सुनो तो वीडियो आवाज फोन दे दो सर आपने लिंक कर दी पाँच मिनट खड़े हो गए ध्यान से किया 5 मिनट खड़े हो गए जैसा के साथ वहां चले गए 5 मिनट के बाद ये फिर इन्होंने ऑफ कर दिया I request all the Department of Mathematics to please be on the dais for the photograph. मैं तो सेट किया है ना सेट किया है किसका एक्सेप्ट कराओगे हो गया हो गया वेटिंग रूम दिखा रहा है अभी आएगा तो मैं मेरे पास आपस में बोलेंगे जिसमें आवाज चाहिए Thank you, Balram sir, for gracing this occasion. Thank you very much. एक काम भाग गया आप कुछ बोलेंगे तब 10 मिनट फोटो बड़ी क्लियर आ रही है इससे थोड़ा पिक्चर में प्रॉब्लम आती है सही है
जैसा भी कोई बोल लेगा उसके हाँ उसके अकॉर्डिंग तो सही है। अभी एक बार हाँ जब ये बोलेंगे ना तब मैं पहुंच हाँ वो तो दे देगा नाम से ठीक है। सोनिया हाँ मैं Hello. Yeah. We are honored to introduce Professor Ruchi Das, an esteemed mathematician and the current head of the Department of Mathematics at the University of Delhi. Professor Das has made remarkable contributions to dynamical systems, pedagogy, and analysis, evident in an extensive research and numerous publications. Beyond her academic excellence, Professor Das has served as the ex-dean of the Faculty of Mathematical Sciences at the University of Delhi, shaping the academic landscape. She has received accolades for her research, including a prestigious postdoctoral fellowship from the Greek government. Actively involved in academic administration, Professor Das has been a key member of the Academic Council and has contributed to various committees focusing on syllabus revision and research culture promotion. Recognized for her expertise, Professor Das has been invited to deliver talks at renowned conferences and seminars. I extend a warm welcome to Professor Ruchi Das and invite her to deliver her address. Please, ma'am. Good morning to all of you. Dr. Sriram has joined online. Car is not here, and Professor Pani has just left. So I am very happy to be a part of this international conference on advancement in pure and applied mathematics, Vision India at the rate 2047. And I first of all congratulate the college for having the NAC A++ grade. So I can very well visualize in the leadership of Professor Carr, all the faculty members and the students must have done a lot of hard work. We all are going through the accreditation processes and we know that how much time, energy and effort you have to put in to get such achievement. So congratulations to all of you. I'm very happy to see the progress of the math department at Shamlal College. I can see many new faces. So many assistant professors have joined. They are very young and energetic. I am sure they all will do, work for the department. And it is, as I came to know that it is the first international conference organized by the department. So I give the best wishes to the department for continuing this effort and organize many, in future also many good conferences. I know because we have also organized in the Department of Mathematics, University of Delhi conferences, and I was at the Baroda also earlier for more than 20 years. We organized there very good two international conferences where we had more than 50, 60, researchers from all over the world to deliver the lectures, and we had even Fields Medal Professor Lyndon Strauss who visited our department there, and we had the proceedings published in the Contemporary Mathematics, which is published by the Proceedings of the American Mathematical Society, and the other one was Discrete and Continuous Dynamical Systems again by American Mathematical Society. So because
of our experience, I can say that this process of organizing the conference is not a one-day job. In so many months advance, you have to think about, how to organize the conference, how to manage for the financial assistance, how to call the good experts in the different areas of mathematics to deliver the lectures, and of course, the participants, fooding, lodging, and after all, once the conference is over, the auditing of the finance. So all of such things, they take lot of effort. So I can understand how much time the convener must have given, and all other team members, Department of Mathematics, to organize this wonderful conference. I am sure that all the experts giving the lectures will naturally encourage the young researchers, because it is a good platform for the young people who are working in the different areas to get exposed to, lectures by the different speakers in different areas. It may happen sometimes that we don't understand fully the lecture because it may not be in the area where you are working. But the way the expert delivers the lecture also motivates you that how you can, take the expertise from them and that inculcate that thing in your, future deliberation. So it is always very good to, attend the lectures by different experts in the area. So I will again, Mr. Sir, I want to congratulate you for taking the college to NAC A++ grade. I can understand that you must have done a lot of hard work which you studied in the college. And I have heard a lot about you that you are a very good administrator, very helping person so that everybody is approachable to you for any kind of problem. So that is a very good part, the leadership of the college is a very important thing. So this is what I wanted to say about the college. I am visiting the college for the first time and I will like to visit in the future also. So all the faculty members of mathematics department are very helpful. Being the head of the department, I know that very often we need the help of the college teachers, whether it is preparing the syllabus, whether it is for the exam, conducting the exam, at least 2 times in a year. Always I have got the help from the teachers. So thank you so much, maths department teachers, for helping the department to conduct everything so smoothly. Recently, we have made the syllabus for NEP. So lot of opportunities are being given to the students, so it's a very challenging job for the department also to prepare the syllabus, keeping in mind the opportunities the students are supposed to get. So we as a teacher are playing very important role in the society. We shape the career of the students every year. So they look for us. So it is our duty also to update ourselves, in this era of digital world. So we need to update our knowledge so that we can pass on our knowledge to the coming generation. So it's very challenging for us also how to keep updated ourselves, and these are the ways, attending the conferences, organizing the conferences, attending many workshops, seminars, so that you are exposed to good, expertise in the different areas of mathematics. According to me, pure and applied mathematics both supplement each other. Unless you have a very good base of the pure mathematics, you cannot do the applied mathematics. And applied mathematics also is important because always you are asked that what is the application of your research work. So pure and applied, they supplement each other. For doing good applied math, you need a good base of pure mathematics. And pure mathematics people also should, apply their work in applied side. So both of them should collaborate. In this NEP, we have seen that in the 4th year, we have the dissertation, entrepreneurship, so they have to collaborate with the industry. So students have lot of options. So the teachers also have to, think on those lines that how to prepare your students so that once they
under graduation, they should be, well taken by the society. So you like nowadays this is era of artificial intelligence, this machine learning and these things. So we have tried to keep some optional papers based on these so that even if you have not read these areas, now you have the opportunity first to learn on yourself and then teach the students. Very often we are hearing that teachers are saying that the syllabus is more, they compare it with the 5 lectures, now it is 3 lectures and those things. But I have a request to these, young faculty members that please think on how the society, how the nation is moving with us. We are talking of, 2047. So unless we prepare ourselves to teach in such a way that our students are not lagging behind. Now we can, we know that the UGC is allowing after 4 years of undergraduate, they can come for the researchers doing PhD. Now, if you will not teach them sufficiently in undergraduate, how you are going to, give them this opportunity of doing the PhD? So it's a very challenging time for us in making the syllabus, how to teach minimum so that we can prepare them something to read on their own also, so that they can excel in the field. This is not the era of the spoon feeding, that everything you try to do in the class. So deciding what minimum or what maximum you have to do to prepare the students. So I have a request that you all work in this particular direction. Don't compare that the syllabus is more or we have, less number of lectures. A particular topic can be taught in 5 lectures, in 3 lectures. It is up to us to decide that what minimum we require to train our students. We have to, prepare them so that their thinking ability is good, their communication skill is good, so that, they are well accepted in the society in terms of their good career. If I remember our days, we were focused in our teaching mainly on the theoretical part. But now it's time like multiple choice questions. You can see very often the students are taught the shortcuts, but they are not being taught to study, the base of whatever we have, the basic mathematics. So we have to make our teaching in such a way that, okay, you have to be trained in this part also and in the theoretical part also. So as I say that this is very challenging for all of us as a teacher, and students are also very intelligent nowadays. They, learn the things very quickly. Even nowadays, we see the small children of 2-3 years, even they don't know how to speak perfectly, but they know how to, operate the mobile. So why? Because their brain is so, good. They are well receptive even in small things. So you can think of the young generation. They in colleges they just come from the school. So you have lot of opportunities to train them in such a way. So I'm sure that this college is taking all care and doing all of efforts to make our students very strong. Placement part is also very important. So I know that the college must be taking good care that after doing undergraduate, what they will like to do. So all the very best to all of you. I'm very happy visiting the college, and I'm sure the conference will be very useful, fruitful, and giving new direction to all the researchers. I know that faculty members are also doing very good research. So please continue that. All the very best from my side. I can just say that with the help of the all college teachers, students and departments, our department of mathematics in QS ranking is between 251 to 300. And in the university department, Department of Mathematics, University of Delhi is ranking 1. So thanks a lot to all of you for all your support. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your views. So continuing with the expression of ours, we are coming back to the usual last sequence what we were doing. So I invite Dr. Virendra, Dr. Subodh, Dr. Swati, and Dr. Subodh, Dr. Swati, Dr. Sudhir.
I also request Mr. Sandeep, Dr. Rahul, Dr. Subhadya Lakshmi to join us in the felicitation of Professor Mr. Tiwari. Actually, of CCS University has just joined us recently, so kindly give a big round of applause for him. Thank you. So, next, further enriching our gathering, we have the honor of Professor Tushar Tiwari, Director IQAC, whose expertise and insight has helped us shaping this conference into reality. He is the Director of IQAC and Saraswati IKS Center and a faculty member in the Department of English at Shanghai College. Professor Tiwari has an impressive record of publications, including so I extend a warm welcome to Professor Tushar Tiwari to address the gathering. Please. I would really like to congratulate the Department of our college for organizing all the participants. Also, accuracy, I'm also thankful to the department for involving accuracy. Accuracy of Shanghai College has been, has been instrumental in promoting academic and co-curricular programs and events in the college. So, I myself belong to English engineering, so I won't be able to say much about the topic, but I'm sure that it's very relevant and contemporary. But the way the title itself being conceptualized, relating it to the vision of India at the rate 2047 is really interesting because every field, every effort, every endeavor, every individual is going to contribute to that vision. So I'm
में काम करता था। एक विदेश से 3 यूनिवर्सिटी के साथ लेके हम जुड़ते हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल लेके आया हमारे प्रिंसिपल सर के पास। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया, इंटरनेशनल क्या करोगे, और इतना सारे विदेशी उनको कैसे लाएंगे यहाँ पे। मैं कि नहीं सर, आप तो प्रपोजल सैंक्शन करने में मुझे 6-8 महीना हो गया। मैं कि इधर सर से नो, दैट इज ऑल्सो फाइन, मैं कम से कम उन लोगों को जवाब दे दूं, मतलब जर्जियाटे के नाना माना जाना माना है, वो ऐसे वैसी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। तो इधर यू से यस और नो, आई एम रेडी फॉर इट, बट एनी हाउ द चेयरपर्सन ही वाज ही इंटरवेंट, कहते इतना अच्छा प्रपोजल, आप इतना टाइम क्यों, मैं कर देता हूँ सैंक्शन, आप गो अहेड। तो इसीलिए आप लोग सीधा बहुत बड़ा सोच रहे हैं, हमेशा थिंक बिग, हमारा टैगलाइन भी श्यामलाल का है, think big, dream big, है ना। So that should be the spirit of in that sense. I congratulate the mathematics department and IQAC. Always think big. और 1-2 मिनट लूंगा मैं, कुछ राइट अप तो लेके आया हूँ, लेकिन उसको छोड़ते हुए मन से कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली हम लोगों का सामने, कम से कम मेरा कार्यकाल में जो भी मैं अभी तक जीवन जहाँ पहुंच पाया हूँ, 2 युगांतकारी परिवर्तन देख रहा हूँ। नंबर 1, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हम लोगों को नहीं मिल पाया, बच्चे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। पहले हमें डर लगता था, नया नया एक्सपेरिमेंट यहाँ भी करते थे, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए एक ठप्पा लग गया, एक वैलिडेशन आ गया कि आप कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट ऑन यू, स्काई इज द लिमिट। और मैथमेटिक्स तो सबका अभिन्न अंग है, तो इसीलिए एनईपी आ गया। तो एनईपी के साथ आप मैथमेटिक्स को जोड़ लीजिए और बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मैं भी एक परेशान होता था, हमारे यहाँ जब जी आया था सीबीसीएस में जनरल इलेक्टिव, एक हिंदी का बच्चा वो कैलकुलस ज्वाइन कर गया था। मैं कि क्या कर रहा है तू, क्यों आ रहा है, मैं भी उसको डिसुएड कर रहा था। लेकिन मेरा भी परिवर्तन हो रहा है कि भाई क्यों नहीं कर सकता, उसका इच्छा है, वो करना चाहता है, सीखना चाहता है। तो एनईडी एनईपी के माध्यम से उसका भी वैलिडेशन हो गया, हम लोगों का नजरिया बदल गया। हम मैं अपने आप को भी भाग्यवान मानता हूँ, हम सभी और बच्चे तो बहुत ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग साइंस थे, फिर कॉमर्स पढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पसंद था, कुछ नहीं था, नहीं कंटिन्यू कर पाता, तो वो साइंस मेरा 12th में बंद हो गया, फिर हम कॉमर्स में आए। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं, आप हिंदी के साथ भी कैलकुलस बहुत पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकते हो, ये सब फायदा आप लोगों को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया हमारा। और सेकंड, 22 जनवरी 2024 के बाद का जो भारत है, उसका भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और मैं देख पा रहा हूँ, हमारे भी घर में बच्चे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं जो नया भारत के लिए। तो आप जब कनेक्ट करते हो, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे आजकल देखते हैं कितना मंदिर था, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये तो सारे मैथमेटिक्स का खेल है बच्चे। तो इसीलिए मैं भी जितना भी यहाँ मैथमेटिक्स का टीचर है, उनको क्लासरूम में बच्चों के साथ और इसको कैसे उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे जोड़ सकते हैं, जरूर उसको एक्सपेरिमेंट कराइए। जितना हमारा पद्धति था उसको भी क्लासरूम में लाइए, इससे बच्चा का और कनेक्टिविटी मैथमेटिक्स से बढ़ेगा, उससे डरेगा नहीं। और इसी के साथ साथ ज्यादा समय ना लेते हुए आपको पुनः बधाई देता हूँ, आप सभी का स्वागत है श्यामलाल प्रांगण में। और सभी को श्यामलाल कॉलेज में जरूर ये जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उसको जरूर आप लोग उसका भी आनंद लीजिए, कॉलेज परिवेश परिवेश पे भी देखिए जरूर इसका भी। ऑल द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, अबाउट टू सम ऑफ देम आर अबाउट टू ब्लूम, यू कैन हैव अ राउंड। थैंक यू, सभी को नमस्कार, थैंक यू। Moving further, I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to Shriram Chothaiwala. सर ऑनलाइन है क्या हमारे साथ सुमन जी? हाँ, यस यस। सुमन जी, आई एम अवेलेबल। हेलो। बलराम है, उन्हें पिन कर दीजिए। नहीं, नहीं, वो सिस्टम
सुमन जी, श्रीराम सर हैं हमारे साथ ऑनलाइन? हाँ, यस, अवेलेबल। हाँ, कहिए। हाँ, जुड़ गए ना। मैं मैडम को देख रहा हूँ, लेकिन उधर से मुझे शायद कनेक्ट नहीं किया गया है। अच्छा, पिन इन्होंने हमारी स्क्रीन कर रखी है। I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to Shriram Chothaiwala ji. He is a retired lecturer from Amolak Chand College, Yavatmal, Amravati University, Maharashtra. Shriram Chothaiwala served as the All India Convener for Vedic Ganit at Shiksha Nyas, New Delhi, and is an All India member of the Vedic Ganit team at Vidya Bharati. Additionally, he is a member of the Indian Society for the History of Mathematics. Shriram Chothaiwala holds the position of Chief Faculty in the Teachers Training Program of Vedic Mathematics at the Art of Living International Center in Bengaluru. With a wealth of expertise, Shriram Chothaiwala has contributed significantly to the field, having published over 30 research papers in peer-reviewed international and national journals. He has presented numerous papers, delivered talks on subjects related to the history of Indian mathematics and Vedic mathematics in national and international conferences, seminars, and webinars during the pandemic period also. Moreover, he actively participates as a faculty member in various workshops conducted for students and teachers by Nyas, Vidyavarti, and Art of Living. Shriram Chothaiwala has authored 6 books on subjects related to Vedic mathematics, with several popular articles published in newspapers and magazines. Additionally, he has delivered speeches on these subjects in educational institutions. His contribution extends to radio talks and a 10-episode TV series on Vedic mathematics for UGC. Thank you, sir, for joining us online and giving us your precious time. Thank you, sir. So I extend a warm invitation to Shriram Chothaiwala to deliver his keynote address. Please, sir. 3 यूनिवर्सिटी के साथ लेके हम जुड़ते हुए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रपोजल लेके आया हमारे प्रिंसिपल सर के पास। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया, इंटरनेशनल क्या करोगे, और इतने सारे विदेशी उनको कैसे लाएंगे यहाँ पे। लेकिन नहीं सर, Are we audible? तो प्रपोजल सैंक्शन मुझे 6-8 महीना हो गया। मैं कि इधर सर Yes, madam, but somebody is talking. कम से कम You उन are लोगों को not जवाब दे audible दूं। actually. मतलब जर्जियाटे के जाना माना है, वो ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। Some audio is playing. You say yes or no, I am ready for it. But सर, एक कोई भाषण कर रहा है वहां से। Somebody is talking. इतना अच्छा प्रपोजल, आप इतना टाइम क्यों? मैं कर देता हूँ सैंक्शन, आप गो अहेड। Somebody is talking. सीधा बहुत बड़ा सोच रहे हैं, हमेशा थिंक बिग। हमारा टैगलाइन भी सामलाल का है, ईयरफोन को डिस्कनेक्ट कर थिंक दीजिए। बिग, ड्रीम बिग, है ना? So that should be the spirit of, in that I congratulate the mathematics department and IQAC. Always think big. प्रिंसिपल साहब का भाषण आवाज आ रहा है मुझे। और 1-2 मिनट लूंगा, इसमें मैं ऑडियो राइट अप तो लेके आया हूँ, लेकिन उसको छोड़ते हुए मन से कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। एक्चुअली हम लोगों का सामने कम से कम मेरा कार्यकाल में जो भी मैं अभी तक जीवन जहाँ पहुंच पाया हूँ, वो युगांतकारी परिवर्तन देख रहा। हेलो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो किए ना, कंप्यूटर किए ना, हम लोगों को नहीं मिल अरे पाया। लेकिन नहीं, ये मेरी बात सुनिए। अभी जो सर का भाषण वो प्ले हो रहा है, मुझे वो आवाज आ रहा है, वहां से कुछ आवाज नहीं आ रहा है। नया एक्सपेरिमेंट यहाँ भी करते थे। अभी जो सर हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए एक ठप्पा लग गया, एक वैलिडेशन आ गया कि आप कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑन इट, स्काई इज द लिमिट। और मैथमेटिक्स तो सबका अभिन्न अंग है, तो इसीलिए एनईपी आ गया। Due to some technical issues, sir will be joining us soon. He is already joined but not audible. परेशान होता था। हमारा यहाँ जब जी आया था सीबीसीएस में जनरल इलेक्टिव, एक हिंदी का बच्चा वो कैलकुलस ज्वाइन कर गया था। मैं कि क्या कर रहा है, तो क्यों आ रहा है? मैं भी उसको डिसुएड कर रहा था, लेकिन मेरा भी परिवर्तन हो रहा है कि भाई क्यों नहीं कर सकता, उसका इच्छा है, वो करना चाहता, सीखना चाहता। तो एनईपी के माध्यम से उसका भी वैलिडेशन हो गया, हम लोगों का नजरिया बदल गया। मैं अपने आप को भी भाग्यवान मानता हूँ, हम सभी और बच्चे तो बहुत ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग साइंस थे, फिर कॉमर्स पढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पसंद था, कुछ नहीं था, नहीं कंटिन्यू कर पाता, तो वो साइंस मेरा 12th में बंद हो गया, फिर हम कॉमर्स में आए। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं, आप हिंदी के साथ भी कैलकुलस बहुत पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकते हो। ये सब फायदा आप लोगों को मिल रहा है।
ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया हमारा। और सेकेंड, 22 जनवरी 2024 के बाद का जो भारत है उसका भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और मैं देख पा रहा हूँ, हमारे भी घर में बच्चे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं जो नया भारत के लिए। तो आप जब कनेक्ट करते हो उसमें सबसे ज्यादा बच्चे आजकल देखते हैं कितना मंदिर था, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये तो सारे मैथमेटिक्स का खेल है बच्चे। तो इसीलिए मैं भी जितना भी यहाँ मैथमेटिक्स का टीचर है उनको क्लासरूम में बच्चों के साथ और इसको कैसे उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे जोड़ सकते हैं, जरूर उसको एक्सपेरिमेंट कराइए। जितना हमारा पद्धति था उसको भी क्लासरूम में लाइए। इससे बच्चा का और कनेक्टिविटी मैथमेटिक्स से बढ़ेगा, उससे डरेगा नहीं। और इसी के साथ साथ ज्यादा समय ना लगते हुए आपको पुनः बधाई देता हूँ। आप सभी का स्वागत है श्यामलाल प्रांगण में, और सभी को श्यामलाल कॉलेज में जरूर ये जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है इसको जरूर आप लोग उसका भी आनंद लीजिए। कॉलेज परिवेश परिवेश पे भी देखिए जरूर इसका भी। ऑल द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, अबाउट टू सम ऑफ देम आर अबाउट टू ब्लूम, यू कैन हैव अ राउंड। थैंक यू सभी को, नमस्कार, थैंक यू। Moving further, I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to Shriram Chothaiwala. Sir, online है क्या हमारे साथ सुमन जी? हाँ, अभी am I audible? हाँ, yes, yes, yes. सुमन Good. जी, अभी आवाज आ रही है मेरा? I am available. Hello. बलराम है, उन्हें पिन कर दीजिए। Hello. Hello. हेलो। सुमन जी, श्रीराम सर हैं हमारे साथ ऑनलाइन? हाँ, ज्वाइन है सर मैडम। हाँ, यस, अवेलेबल। हेलो, हाँ जी सुमन सर, आ रही है आवाज? हाँ, अब देखो सुमन सर, आ रही है आवाज? मैं मैडम को देख रहा हूँ लेकिन उधर से मुझे शायद कनेक्ट नहीं किया गया। सुमन सर, आ रही है आवाज आपको? नहीं, आपको यहाँ से जा रही है, वहाँ पे मोबाइल से भी ज्वाइन कर लो सर। हमारी स्क्रीन मोबाइल से ज्वाइन करना है? मोबाइल से भी ज्वाइन कर लो और लैपटॉप से नहीं, एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैंने ऑन किया, नहीं आ रही। I would like to take the opportunity to extend a warm welcome to Shriram Chothaiwala ji. He is a retired lecturer from Amolak Chand College, Yavatmal, Amravati University, Maharashtra. Shriram Chothaiwala served as the All India convener for Vedic हेलो। Vidya Bharati. Additionally, he is a member of the Indian Society मांगता है वो मांगता हूँ। हेलो for जी Training सुमन जी, अब आवाज आ रही है? at the Art of Living International Center in Bengaluru. With a wealth of expertise, Shriram Chothaiwala has contributed significantly to the field, having published over 30 research papers in peer-reviewed international and national journals. He has presented numerous papers, delivered talks on subjects related to the history of India. पहले तो शोर आ रहा था हमारा। आवाज तो यहाँ से साउंड तो उसमें जा रही है ना, इससे इसमें लगी है। सुमन जी, आ रही है बाबा? सुमन जी, तो सिस्टम वाला उधर की आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। अरे जल्दी आना, ऊपर जैसे वो गौरव है क्या बगल में? बोलो दूसरा लैपटॉप लेकर फटाफट आएगा। ये उधर से आवाज यहाँ नहीं आ रही है स्पीकर में। इस सेटिंग में आपने जो सुनने की सेटिंग, और इतना सर विदेशी उनको कैसे लाएंगे यहाँ पे? लेकिन इस तरह आर बी ऑडिबल तो प्रपोजल 6-8 महीना होगा। यस, यस, yes madam, but somebody is talking. You are not audible actually. I don't know madam, but what is the problem?
यूट्यूब क्यों चला रहे हैं? some audio is playing. यूट्यूब पे क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ जी सर। सर आज बंद क्यों हो रहा है? लाइव ऑन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम है, इतने बंद करूंगा। इससे दिखना आवाज आ रही है। वो है कहाँ? ये वो ऑफ कौन हो है? गया तो क्या? यही श्री राम जी का बलराम से बोलना बोलेंगे। बोलो। बलराम सर और कहाँ जा रहे हो? कौन है? बोलो तो सही, कौन है? कौन? अरे हम लोग आपस में ही चेक कर लो ना। बोल बलराम सर। हाँ जी सुमन सर, आ रही है आवाज? आ रही है सर, आवाज आ रही है। कहाँ के बलराम सर? कहाँ के बलराम सर? कौन थे? उनके बात हो रही थी। एक आदमी के साथ चले जाओ ना, 2 मिनट रुक के। 2 मिनट बोलो ना, बोलेंगे 2 मिनट बोलेंगे, आवाज आ रही है, चेक हो जाएगा। अपने मन से नहीं होता, उठ के चले जाओ। हेलो, हाँ जी सुमन सर। माइक आ गया, माइक यहाँ पे। हाँ जी सुमन सर। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है फिर, थैंक यू। हेलो हाँ हाँ बलराम सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, हाँ जी सुमन सर, आवाज आ रही है क्लियर? ये आपकी आ रही है आवाज सर। ओके ओके। श्री राम सर को बोलो बोलने के लिए। हेलो हेलो अब श्री राम सर कहाँ गए? श्री राम सर सुमन जी सर को पिन कर दीजिए। मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir, you are audible. ओके ओके, थैंक यू। Now share your screen and see if everyone can see it. Share screen करें। Disable. Okay. Are you going to share your screen? No. नमाल पर बोला है सर। Okay. Can I continue? यस सर प्लीज। किसने किया था? Thank you. यस सर। Thank you. इनको सबको इन्हीं को गले Sorry for the inconvenience. नहीं तो क्या सर। All the dignitaries on the dais and principal of the college and Department of Mathematics and IQSC, Shamlal College. At the outset, I congratulate all the members of the Mathematics Department for spearheading the International Conference on Advances in Applied and Pure Mathematics at 2047. And I am also thankful to all of you for inviting me in a virtual mode to share my thoughts about the subject. The conference is theme of the conference is related with many of the advanced mathematics subjects, and I'm really intriguing to see the list of the subjects on which the conference is going to deliberate. But in that list, I'm surprised, and for that also I congratulate the Department of Mathematics to include a subject, Vedic mathematics. Now, a question arises, what is Vedic mathematics? And why Vedic mathematics is necessary? The word Vedic mathematics is not limited to the book by Swami Bharati Krishna Tirtha ji. When we in India say Vedic mathematics, it means mathematics developed in India since Vedic period. So if anybody asks me, how much old is mathematics in India at least, or how much old the study of mathematics is going in our country, then the simple
answer will be mathematics is as old as Vedas. जितने वेद पुराने हैं उतना मैथमेटिक्स पुराना है. इसीलिए वेद में मैथमेटिक्स के विषय में बहुत सारे श्लोक, verses, suktas, etc. are all available in the Vedas. That is the reason why it is called Vedic mathematics. And from the very beginning in our country, हमारे देश में बहुत साल से इस प्रकार के मैथमेटिक्स के विषय में एक बहुत उच्च धारणा थी. A very mathematics is highly esteemed as a subject. What they used to say about mathematics, what was the thought process about the mathematics, is given in one of the verse from Vedanga Jyotishya, where they say, Ganitam Murdhani Sthitam. Ganit is at the top of all the subjects. And that is what we today even experience. No field of our life is free from mathematics. Not a single field. There was one mathematician called Mahaviracharya. In his book, Ganita Sara Sangraha, he listed 32 subjects in which the mathematics is useful or mathematics is necessary, or without mathematics you cannot study those subjects mathematics. That list itself starts with engineering, Dharma Shastra, music, economics, dramatics, prosody, grammar, astronomy, etc., etc. And in the end of that, he says that, और अधिक क्या बातें करना, बहुभी विप्रलापे हि किम, what to say more, यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन विना नहीं. गणित के बिना इस जगत में कुछ भी चलने वाला नहीं है, ना चलता है, ना आगे जाके भविष्य में चलता है, चलेगा. This list of 32 subjects given by mathematics, given by Mahaviracharya, can be safely extended to 100 subjects now, where mathematics plays and becomes a vital role to study that particular subject. So from the very beginning in India, there is a thought process of giving an importance to mathematics. And with that thought process, just imagine a period when the persons of that period does not know the numbers itself. Forget about the counting. They don't know the number. They don't know what is 1, what is 2, what is 3. Nothing. Forget about the counting. Then at one fine morning, our Indian brain, हमारा भारतीय मन, हमारी भारतीय बुद्धि ने एक अंकों का सृजन किया. एक दिन ऋषि लोग आकर कहने लगे कि चलो, this is 1. This is the concept of 1. Then add 1 to it, it becomes 2. Come up to 9. Then they formalize the very abstract concept called 0. Then the counting starts and it goes infinity. Only because once you add number to any number 1, we get a larger number. So they developed a system which we used to call today decimal system. So that is the most important contribution and significant contribution, not only in the development of the mathematics, but in the development of science and all humanity. When we discovered these numbers and 0, that was the golden moment of history of the mankind. After that, they started talking about the operations on numbers, as we know all those basic operations from addition to division. Then they start talking about sequences of numbers. And you will be surprised to know that even in our syllabus today, even in our postgraduate syllabus or university syllabus or college syllabus, there are sums not given by the Indian mathematicians. So our syllabus does not contain that types of sums even today. I will tell you one example, one or two examples. One example say, we know the sum of squares of n natural numbers. That formula we know. What
our mathematicians extended that formula, like Sridhara or Mahaviracharya, to sum of squares of n terms of arithmetic progression. Means that formula will give me the answer for t1 square plus t2 square plus t3 square, etc. in place of 1 plus 1 square plus 2 square plus 3 square. Formula is not in the syllabus, not even today's syllabus. Same for thing is extended for t1 cube plus t2 cube plus t3 cube up to tn cube. That is sum of cubes of first terms of arithmetic progression. That formula is again not in the syllabus. So there are many such things which our Indians were contributed. I repeat my word, contributed to the subject. They don't only teach the subject, they contributed the subject immensely. A long tradition. जैसा हमारे देश में संतों की परंपरा है, महापुरुषों की परंपरा है, वीरों की परंपरा है, संतों की परंपरा है, एक भी हमारा देश का प्रांत ऐसा नहीं है कि जहां कोई ना कोई महापुरुष जन्म नहीं हुआ. उसी आधार पर, on the same ground, we can say that there is not a period of 100 years in our history from, say, Vedic period up to 224. I repeat, up to 224, that there is no mathematician which has not contributed to subject. A long list of mathematicians can be very easily said. I will just quote 4 or 5 names from ancient history and then 4 or 5 names from the current. Aryabhatta everybody know, only because we have, हमने जो उपग्रह छोड़ा था सैटेलाइट, उसको नाम दिया था आर्यभट्ट 1. So then people start asking who is Aryabhatta, and they know that he was a great mathematician of India, one of the great mathematicians of India. Then comes Varahamira, then Brahmagupta, then Bhaskaracharya, Sridhar, Veerasen, Mahavir, Vateshwar, long list, Bhaskaracharya, Narayan Pandit. If I move to south, then it will be Parameshwar, Nilakantha, Jeshtadeva, Shankar Varyar, Ganesh Devadya, Pruthaman Somayaji. I can count a lot. So up to Ramanujam. So from Aryabhatta to Ramanujam means roughly 500 AD to 1920 when Ramanujam birth year. Lot of mathematicians are there who contributed to the subject. Unfortunately, in our school syllabus or even in our college syllabus, there is a photograph of Pythagoras. We know about Newton, we know about Euler, we know about Lagrange, and so many. They are all great, one of the greatest mind and one of the greatest mathematicians of the world, no doubt. I have nothing to say against them. They are all great mathematicians. But in addition to all these great mathematicians, India has produced a lot of mathematicians who have contributed to the subject. Coming to the Ramanujan, we know, everybody know about Ramanujan, that he was a great mathematician, but he thinks in a Bharatiya Parampara, Indian knowledge way. What he thinks, he used to say that an equation to me has no meaning if it does not express a thought of a God. यानी कोई भी इक्वेशन मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा यदि वो कोई भगवान का कोई विचार, थॉट ऑफ ए गॉड, एक्सप्रेस नहीं करता है. तो इस प्रकार के माइंडसेट से रामानुजम ने भी वर्क किया था. तो इसलिए हम सब लोग रामानुजम के प्रति भी बहुत आदर रखते हैं. लेकिन रामानुजम, बहुत बार ऐसा लगता है कि एक आर्यभट्ट थे, एक भास्कराचार्य थे, बाद में एक रामानुजम थे और बस हो गया, बंद हो गया. ऐसा नहीं हुआ हमारे यहाँ. रामानुजम के बाद भी आज तक बहुत गणितज्ञ हमारे यहाँ हुए. हम सब दिल्ली में बैठे तो मैं कुछ नाम जरूर लूंगा. गणेश प्रसाद, भूदेव शर्मा, शिवा पिल्लई, अभ्यंकर, नारायणकर, सत्येंद्र नाथ बोस, परिमला रमन, के.बी. रामनाथन, राघवन, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये परंपरा आज भी चल रही है. दुर्भाग्य से ये सारे परंपरा और इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे यहाँ जानबूझकर deliberately ignored और बाय बहुत सोच के उनको इग्नोर किया इसीलिए गया कि हमारा स्वाभिमान जागृत न हो. हमें सब ऐसा बताया गया आज तक कि जो कुछ भी मैथमेटिक्स
निर्माण हुआ, चला और हम पढ़ रहे हैं, वो सारा का सारा मैथमेटिक्स पश्चिमात्य देशों से हमें आया। उल्टा है परिस्थिति, हमारे देश से पहले अरब में गया, उसको कहा गया हिंदसा। बाद में फिबोनाची ने उसी अरब ग्रंथों को ट्रांसलेट करके यूरोप में गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड is to be very correctly understood and to be proud of that every time. So whenever we select a subject mathematics for our study, जरूर हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ना है, नंबर थ्योरी पढ़ना है, सारे जितने भी विषय है आज के मैथमेटिक्स के, वो तो पढ़ना ही है, सवाल ही नहीं, उसके बिना आप चलेगा भी नहीं। फिर कोडिंग है, एआई है, वॉट एवर आर द सब्जेक्ट्स देयर, बट उनके साथ साथ ये जो हमारी भारतीय गणित की दिव्य परंपरा है, उसी को भी हमें पढ़ना चाहिए। वो आज कोई समस्या नहीं है। मैं ये मानता हूं कि संस्कृत के कारण कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में है, लेकिन मूल ग्रंथ संस्कृत में होने के बाद भी, इवन इफ द स्क्रिप्ट्स आर इन संस्कृत, नाउ द ट्रांसलेशन इज अवेलेबल, नाउ द commentaries are available in English, so you will not need that much Sanskrit to understand those scripts. So I request all of you who are attending this conference to go through the Bharatiya Gyan Parampara of Ganit. I will not say Indian. Now Indian is to be replaced by Bharatiya. That IKS should be replaced by BKS, if at all we want to short form it in English. So I request all the participants and especially Department of Mathematics of Shamlal College to take a step forward for making available all this study of Indian knowledge system or Bharatiya knowledge system, which is now a part of UGC syllabus and our NEP. That is the main purpose of introducing that BKS in the syllabus of mathematics. I will now just quote you 2 or 3 interesting contributions again, and then I will finish. We all know about Fibonacci. Fibonacci was a great mathematician, and he discovered Fibonacci numbers. And now that Fibonacci number, starting from Fibonacci number, that branch Fibonacci has now available in form of various disciplines like Fibonacci geometry, Fibonacci trigonometry, Fibonacci calculus, and so on and so forth. But well before Fibonacci, there was a mathematician in India called Narayan Pandit, who has developed this Fibonacci sequence, and not only the Fibonacci sequence, but the extension of Fibonacci sequence. Fibonacci sequence are obtained by adding previous 2 numbers. We get a third next number. What Narayan Pandit did was a Fibonacci sequence. Means by adding previous 3 numbers, next term will be there. This Fibonacci term itself a very new, I told you. The term Fibonacci itself come in existence in 1963. But well before this Fibonacci term, Narayan Pandit in 1356 AD, in his book Ganita Kaumudi, has developed this extension of Fibonacci sequence. And here doesn't stop at Fibonacci. Then he said Tetranacci, means how to generate a sequence by adding 4 number, 5 number. And then he has given a formula for generating, in our today's language, what we used to call N-Nacci sequence. So by using that Narayan Pandit's formula, we can easily generate any order of a Fibonacci sequence. So this is just one example which tells us that there are many things which are under the wrap, purposely kept under the wrap, I must say. It is always said that वो पुस्तक संस्कृत में मतलब मंत्र है, पूजा है, स्तोत्र है, विधि है, यज्ञ करना है, लेकिन उसमें गणित नहीं हो सकता। इस प्रकार की एक गलत धारणा के कारण वो ग्रंथों को हमारे यहाँ कभी भी स्पर्श नहीं किया गया, दूर रखा गया, पर्पसली दूर रखा। उन्होंने पढ़ा,
आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जितने भारतीय गणितज्ञ है, भारतीय विद्वान है जिन्होंने इन ग्रंथों को पढ़ा, उनसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज के विद्वान है जिन्होंने संस्कृत पढ़कर उन ग्रंथों को पढ़ा। उनको पता चला कि ये ग्रंथ यदि सामने आ जाते हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी उनकी सारे लाइन ऑफ एक्शन में। उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ थॉट क्या है? एवरी मैथमेटिक्स कम्स फादर ऑफ द मैथमेटिक्स, फादर ऑफ द अरिथमेटिक, पाइथागोरस, डायोफेंटस, ऑयलर। ये जो उन्होंने एक अपनी यहाँ बना ली है व्यवस्था, उसको फिर धक्का पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने, हम उस समय तो हम ठीक है, हम गुलाम थे, इंग्रज हमारा स्वतंत्र नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इस विषय को पर्पसली दबाया गया है। लेकिन आज मुझे बहुत इस आनंद हुआ कि आपने जब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी, व्हेन यू ऑर्गेनाइज दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड वेरियस modern subjects are there as a theme. One subject is Vedic mathematics. So I decided to speak few words about the Vedic mathematics. I again thankful to authorities of the college and request all the authorities of the college, all the students of Department of Mathematics, all the faculty members of the mathematics, and the all dignitaries on the dais, particularly Principal Sir and Shivraj Singh Sir. I request all of you that this particular subject should be the part of the curriculum. Let it be via certificate course, let it be via diploma course, let it be via PG diploma course, let it be via credit course, whatever way, let it be via value added course. Whatever way we can introduce this subject, we should introduce this subject in our system and let students know all the things about our tradition, and then they will get inspired by that and they will do many more things in addition to what earlier our ancestor has done. Once again, I'm thankful to everybody. Namaste. Thank you, sir, for sharing your wisdom in Bharatiya Gyan Parampara, and especially whatever guidance you have provided us, we will definitely try to adhere to that. And yes, just you said about Ganita Committee by Narayana Pandita. So definitely, so we will try to follow that manuscript and try to explore further few things and to come up the more elaboration of those things according to the contemporary relevance. And one more thing I would like to add here, sir, I just want to bring into your knowledge that we are already doing in this field, as we have done the certificate course on Vedic mathematics also. 2 years back, 15-day course we have done for the students and for the faculty also. And we also have the Saraswati IKS Center based on this ancient India. So mathematics is also one part of that. So our under the guidance of principal sir, so we are trying to do as much as we can go further in this field. And further, according to your guidance, we will try to further elaborate more few things. Thank you, sir. Thank you very much. Next, I would like to call Dr. Mukesh Kumar to present the vote of thanks to the audience. My name is Mukesh, Department of Mathematics, Jamnagar. So, you are very welcome to International Conference on Advances in Pure Mathematics, Pure and Applied Mathematics in Jamnagar College. We are very thankful to our chief guest, Ram sir, and Dean of Colleges, University of Delhi. Guest of honor, Shri Ram sir, All India Convener, and distinguished guest, Professor Ruchidas ma'am, Head of the Department of Mathematics, University. And also, I would like to thank Principal Sir, Usha ma'am, and Subodh sir for the continuous guidance for this conference. I extend my thanks to Professor Sanjay sir, scientist, DRDO, for their support and the sponsorship for the conference. Today, we have invited talks of Professor Hazard, University of Turkey, and Dr. Sachin sir, Department of Mathematics, University of Delhi, and Dr. Sachin sir, Suman, Department of Mathematics, ANDC College.
And before this session is before the lunch. After the lunch, we have invited talks of Dr. Sanjay sir, Pankaj sir, and Ankit Kumar. After that, we have parallel session of paper presentation for various scholars and faculty. Thank you everyone for this conference, and now I request you to please stand up for the national anthem. Please play the national anthem. Thank you. Now, I would like to welcome for the high. Thank you. Now, I welcome you all for the high tea outside this conference hall. All the parents to please be on the stage for the group photograph. उसी के चक्कर में तो आधा घंटा बर्बाद किया है यहाँ से बंद किया हुआ था कौन बैठा था मेरा हाजी बैठे ज्यादा जगह से बंद करने से कंफ्यूजन होती है यहाँ से बंद कर दोगे हम यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं वहां से आवाज क्यों नहीं आ रहा है वहाँ माइक चेक कर रहे हैं बंद यहाँ है ज्यादा नहीं करनी चाहिए एक जगह कंट्रोल यहाँ पे हो या यहाँ देखो सीखने की बात नहीं है सीखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है एट द टाइम जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है अब यहाँ पे सारे माइक हम चेक कर रहे हैं सबकी खुली हुई है नहीं खुली है वीडियो आ रहा है ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है अब कई बार है कि हम जैसे उसमें लड़के का मैंने मोबाइल चेक कर रहा है कोड निकाल के मैंने इसमें लगा दिया अब मैं यहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी जगह दौड़ाओगे कि यहाँ चेक करें यहाँ चेक करें यहाँ चेक करें अच्छा ये वो रिपीट पे लगा हुआ था यूट्यूब में लगा रह गया ना वो रिपीट यूट्यूब पे नहीं था टीएलसी पे भी लूप आता है वो वीडियो नहीं चलाया था सुबह में लगातार चले जा रहा था झंडा चलने लगा तो मैं भी खड़ा हो गया मैंने ध्यान नहीं दिया अब क्या करें इसको एंड करते सेशन को हो तो गया कर दो जनरेटर बंद कर जाओ जनरेटर चल रहा है अब क्या करूं फिर एंड कर दो सेशन कर देता हूँ तो लंच पे जाना है तो क्या देखेंगे यहाँ पे बैठ के कोई
अब लंच का आफ्टर लंच